we are thankful to Maharaj. Maharaj is serving Srila Prabhupada's mission for the last more than 48 years. I would also like to welcome 40 devotees from China. So it's all the hard work of Maharaj. Maharaj has been preaching in Asian countries like India, Philippines, China, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Malaysia, Thailand. And Maharaj has been teaching in MIHE also, right from its inception in 1990. And all of you who are going to Mayapur Parikrama, Maharaj is a very known face. For the last 20 years or so, Maharaj is consistently giving his wonderful association in the Mayapur Parikrama and stays in camp there along with all the devotees. Maharaj leads a very simple lifestyle, very strict in his sadhana. Maharaj is known for walking his talking, and anyone who comes close to Maharaj develops deep love and affection for Maharaj. And we are extremely thankful to Maharaj that Maharaj came here. Last year also Maharaj came during the same time also. And we are requesting Maharaj that keep this yearly quota of mercy for us and keep on blessing us. I would also like to welcome from China Her Grace Leela Shakti Mataji, Her Grace Gurmala Mataji, and her husband is Grace Uttam Gaurang Prabhu. Uttam Gaurang Prabhu is from Mayapur and he is a pujari of Panch Tattva. And we'll also like to welcome His Grace Rajendra Gaurang Prabhu, who will be translating into Chinese. And see, it's a wonderful thing. China में जो प्रचार हो रहा है, आप सब जानते हैं कि चाइना जैसे देश में प्रचार करना इतना आसान नहीं है. और अब चाइना में इतना जोर शोर से प्रचार हो रहा है कि मायापुर परिक्रमा में 200 से भी अधिक भक्त चाइना से आए थे. Teaching in China is really flourishing because of efforts of Maharaj and other sincere souls. तो आइए इन सब भक्तों का हम स्वागत करते हैं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आप सब भक्तों से निवेदन है कि मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर रखें. हरे कृष्ण. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So this morning, in preparation for the coming appearance day of Lord Ramachandra, I think, we've selected some verse from the 9th canto, Srimad Bhagavatam, chapter 10, the pastimes of Lord Ramachandra, and this morning we're reading text 23. So, अभी जैसे रामचंद्र का आविर्भाव दिवस रामनवमी के पूर्व संध्या के अवसर पर हमने ये खास तौर पर ये श्लोक आप देख सकते हैं. जबकि हालांकि ये क्रम भी हमारा चल रहा था श्रीमद् भागवतम का, तो विशेष तौर पर. So Prabhu told me actually this is your regular verse, so very special arrangement. Coincidence. Yeah, coincidence. तो ये जो जैसे देख रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है जहाँ पर यही जो रामचंद्र का प्रसंग जो है वही भागवतम से भी चल रहा है. Evam Shipan Danushi Sanditam Utsasarja Banam Sa Bajram Eva Tadritayam Bibeda Sostriga Vaman Dasamukha Nyapatad Vimanad Daheti Jaupati Jane Sukritiva Rikta Evam Shipandu Nushi Sanditam Utsatsarja Evam Shipandu Nushi Sanditam Utsatsarja
Banam sabajram eva tadridayam bebeta. Sashrigavamanda samukerni apatad vimanad. Daheti jaupati jane sukrite varikta. Evam sipam danusi sanditam utsasarja. Banam sabajram eva tadridayam labbebeda. Sashrigavamanda shamukerni apatad vimanad. Daheti jaupati jane sukrite varikta. Evam sipam danusi sanditam utsasarja. Banam sabajram eva tadridayam bebeda. Sashrigavamanda shamukerni apatad vimanad. Daheti jaupati jane sukrite varikta. Evam kshipandanushi sandhit mutsasarja. Banam sabrajamiva tadvidayam viveda. Vigmandash mukherane katad vimana. Daheti jalpati jane sukriti varikta. In this way, Shipan chastising Ravana, Danusi on the bow, Sanditam fixed an arrow, Utsasarja released towards him, Banam the arrow, Sa that arrow, Vajrameva like a thunderbolt, Tadridayam the heart of Ravana, Bebeda pierced, Sa he Ravana, Astrika blood, Vaman vomiting, Dasamukai through the 10 mouths, Nyapatat fell down, Vimanat from his airplane,
Ha ha. Alas, what happened? Hai hai, kya hua? Iti. Thus. इस प्रकार Jaupati. Roaring. दहाड़ते हुए Jane. When all the people present there. सारे लोगों के सामने Sukriti eva. Like a pious man. पुण्यात्माओं की तरह Rikta. When the results of his pious activities are finished. पुण्यों के चुक जाने पर. Translation. After thus rebuking Ravan, Lord Ramachandra fixed an arrow to his bow, aimed at Ravan, and released the arrow, which pierced Ravan's heart like a thunderbolt. Upon seeing this, Ravan's followers raised a tumultuous sound, crying, "Alas, alas, what has happened? What has happened?" As Ravan, vomiting blood from his 10 mouths, fell from his airplane, just as a pious man falls to earth from the heavenly planets when the results of his pious activities are exhausted. इस प्रकार रावण को धिक्कारने के बाद भगवान रामचंद्र ने अपने धनुष पर बाण साधा और रावण को निशाना बनाकर बाण छोड़ा, जो रावण के हृदय में वज्र के समान भेद गया। इसे देखकर रावण के अनुयायी आर्तनाद करते हुए चिल्लाए, हाय हाय, क्या हो गया? क्योंकि रावण अपने 10 मुखों से रथ वमन करता हुआ अपने विमान से उसी तरह नीचे गिर पड़ा, जिस प्रकार कोई पुण्यात्मा अपने पुण्यों के चुक जाने पर स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहता है। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. In Bhagavad-gita 9:21 it is said, Shini punya martya lokam vishanti. When the results of his pious activities are exhausted, those who have enjoyed in the heavenly planets fall again to earth. The fruitive activities of this material world are such that whether one acts piously or impiously, one must remain within the material world according to different conditions. For neither pious nor impious actions can relieve one from Maya's clutches of repeated birth and death. Somehow or other, Ravan was raised to an exalted position as the king of a great kingdom with all material opulences. But because of his sinful act of kidnapping Mother Sita, all the results of his pious activities were destroyed. If one offends an exalted personality, especially the Supreme Personality of Godhead, one certainly becomes most abominable, bereft of the results of pious activities. One must fall down like Ravan and other demons. It is therefore advised that one transcend both pious and impious activities and remain in the pure state of freedom from all designations. Sarvapadi vinirmuktam tatparadvena nirmalam. When one is fixed in devotional service, he is above the material platform. On the material platform, there are higher and lower positions. But when one is above the material platform, he is always fixed in a spiritual position. Sagunam samatityaitan Brahma bhuyaya kaupate. Ravan, or those like him, may be very powerful and opulent in this material world, but theirs is not a secure position, because after all, they are bound by the results of their karma. Karmana daiva netrena. We should not forget that we are completely dependent on the laws of nature. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasha ahankara vimudatma kartahamiti manyate.
The bewildered spirit soul, under the influence of the three modes of material nature, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by nature. Bhagavad-gita 3:27. One should not be proud of one's exalted position and act like Ravan, thinking oneself independent of material nature's laws. भगवद-गीता 9वें अध्याय 21 श्लोक में कहा गया है, क्षीणे पूर्णे मर्त्यलोकम विशन्ति। जब पुण्यों के फल चूक जाते हैं तो स्वर्ग को भोग करने वाले पुनः पृथ्वी पर आ गिरते हैं। इस जगत में के सकाम कर्म ऐसे हैं कि कोई चाहे पुण्य करे या पाप, इसी संस्कार के भीतर भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रहना होता है, क्योंकि पाप या पुण्य के द्वारा बारंबार जन्म मृत्यु की माया के चुंगल से छूटा नहीं जा सकता। रावण को किसी तरह समस्त ऐश्वर्यों से युक्त महान साम्राज्य का राजपथ मिल गया था, किंतु सीता देवी का अपहरण जैसा पाप करने के कारण उसके सारे पुण्य कर्मों के फल विनष्ट हो गए थे। यदि कोई किसी महापुरुष का विशेष रूप से भगवान का अपमान करता है तो वह निस्संदेह अत्यंत अधम हो जाता है और अपने पुण्य कर्मों के फल से विहीन होकर रावण तथा अन्य राक्षसों की भांति नीचे गिर जाता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि मनुष्य पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठे और समस्त उपाधियों से रहित शुद्ध अवस्था में रहे। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तो तत्प्रत्यवेन निर्मलम्। जब कोई मनुष्य भक्ति में स्थिर हो जाता है तो वह भौतिक स्तर से ऊपर चला जाता है। भौतिक स्तर पर उच्च तथा निम्न दशाएं होती हैं, किंतु भौतिक स्तर से ऊपर होने पर मनुष्य आध्यात्मिक स्थिति में सदैव स्थिर रहता जाता है। सब गुणा समन्वितः ब्रह्म भूयाय कल्पते। रावण या उस जैसे अन्य लोग भले ही इस भौतिक संसार में शक्तिशाली एवं ऐश्वर्यवान हो, किंतु उनके पद सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अंततः वे अपने कर्म फलों से बंधे रहते हैं। कर्मणा देव निर्णय। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम प्रकृति के नियमों के पूर्णतः अधीन हैं। प्रकृति कर्माणि गुरुकर्माणि सर्वशः अहंकारणात्मा करता है विधिमन्यते। प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव के अंतर्गत मोहग्रस्त जीव अपने को उन सारे कर्मों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। भागवत-गीता 3 अध्याय 27 श्लोक। किसी को न तो अपने उच्च स्थान का घमंड होना चाहिए और न ही अपने को प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र मानकर रावण की तरह कर्म करना चाहिए। Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nyamanobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yatapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Ragnathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishaka Nitamscha Hare Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusate Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhu bhayevacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivedanta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
So there are many things to be learned from this pastime of Lord Ramachandra killing Ravan. तो रामचंद्र के इस रावण वध के लीला से जो है बहुत कुछ सीखने लायक है. We see Ravan had performed great austerities. He'd done a lot of pious activities. तो हम यहाँ देखते हैं कि रावण ने बहुत तपस्या की थी और बहुत प्रकार के पुण्य कर्म भी किए थे. Pious activities bring rewards, they bring results. We can see Ravan was enjoying a great kingdom, he was very powerful. तो हम देखते हैं कि रावण की जो है बहुत सारी पुण्य राशि थी और जिसके फलस्वरूप उनका विशाल साम्राज्य था. He had great wealth and he had great power and he had a wonderful kingdom. He had many wives also, beautiful women. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उनका जो है उनका बहुत ऐश्वर्य था, उनकी बहुत सुंदर-सुंदर पत्नियाँ थीं. But still he was not satisfied. He was greedy to get more. फिर हम देखते हैं कि वो संतुष्ट नहीं था, फिर भी और उसके अंदर लोभ था, और मिले. So pious activities, we should understand their material activities. They don't help us to free us from birth and death. तो हमें ये समझना चाहिए कि पुण्य कर्म आध्यात्मिक नहीं बल्कि भौतिक होते हैं और इसीलिए ये हमें इस बंधन से छुड़ाते नहीं हैं. Of course, it's very attractive to people to be known to be pious. हालांकि पुण्यात्मक कहलाने का जो है हमें बहुत शौक हो सकता है. If you're just known as a great devotee, doesn't mean very much, you know. People won't value. बहुत महान भक्त है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्या है? But if you're very pious, oh, he's very charitable, oh, he did so many great things, oh, he's very, then people will honor him, give so much respect. तो अगर वो पुण्यवान है, बहुत बड़ा दानी है, तो उसका बहुत नाम होता है, मान होता है, लोग उसको पहचानते हैं. But that piety is material. It keeps you in the material world. Just by being pious, you're not going to go beyond the material world. मगर ये जो सारा पुण्य है, ये पुण्य आपको इसी जगत पे रखता है. So therefore we see in the Bhagavad-gita, Krishna describes karmakanda. Karmakanda activities, very popular. People like to do karmakandi activities. They don't much like to do yoga. They don't want to do bhakti yoga especially. तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कर्मकांड का जिक्र करते हैं भागवत गीता में. और क्योंकि कर्मकांड जो है वो बहुत मतलब जाना पहचाना है, लोग कर्मकांड करना पसंद करते हैं, पर बहुत कम लोग जो है योग और खासतौर पर भक्ति योग पालन करना पसंद करते हैं. Karmakandi activities will keep you in the material world. They can bring you to the higher planets and you can enjoy the opulence of the higher planets, but you cannot stay there. You have to come back again. तो कर्मकांड का जो है नतीजा ये होता है कि आप इसी जगत में रहते हैं. हाँ, ये जरूर है कि आप उच्च लोगों की प्राप्ति करते हैं, पर उच्च लोगों में ज़्यादा देर रह नहीं सकते, आपको वापस यहीं आना होता है. Right? You go to enjoy for some time, you have to come back again. जैसे कि आप कुछ देर जाइए, वहाँ पर जो है आनंद उठाइए और फिर वापस आ जाइए. Just like in Delhi, sometimes you go to Missouri or you go to the Simla, you go to the hill mountains and you enjoy, oh, very nice, fresh, but you don't stay there forever. You come back again. जैसे आप दिल्ली से जो है भागकर कभी शिमला जाते हैं, मसूरी जाते हैं और वहाँ के जो है उस वातावरण का लुत्फ उठाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मगर आप टिकते नहीं है, वापस आना पड़ता है आपको. So pious activities are like that. They can take you to higher planets. You have to come back. You don't enjoy forever. तो इसी तरीके से जो है पुण्य कार्यों का जो फल होता है ये इसी तरीके से होता है. आप ऊपर जाते हैं, भोगते हैं, फिर वापस आना पड़ता है, हमेशा नहीं होता. So here we see the example of Ravan, that he'd done a lot of pious activities, he'd done austerities, tapasya, and he got power, he got results. तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं रावण के परिवेश में देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने तपस्या करी, उसने बहुत पुण्य कर्म करे. But he made a very great mistake. बहुत बड़ी गलती करी. He tried to take away Mother Sita, the goddess of fortune, from the Supreme Lord.
मगर उसकी गलती क्या थी, वो भाग्य लक्ष्मी देवी यानी कि माता सीता, उसको जो है भगवान से परमेश्वर भगवान से छीनने की कोशिश करी. Mother Sita, the goddess of fortune, the Lord's own consort, and Ravan was trying to take her away from the Lord. A great offense, and for this offense, he lost everything. तो भगवान से जो है लक्ष्मी देवी को छीनने का दुष्प्रयास था उसका, तो उसका नतीजा उसको यही मिला, और जो उसके पास जो भी था वो सारा जाता रहा. In the same way, in the modern times, people trying to take Lakshmi, they're trying to capture wealth, which is simply Mother Sita in her other form. Mother Sita is Lakshmi, the goddess of fortune. Lakshmi means wealth. Modern people, they're all greedy to get wealth. They don't understand that wealth is actually the property of the Lord. तो ऐसी तरीके से हम आधुनिक समाज में भी देख सकते हैं, सभी लोग लक्ष्मी के पीछे पागल हैं और लक्ष्मी छीनना चाहते हैं. लक्ष्मी जो है वो भगवान की संपत्ति है, भगवान की है. तो उस तरीके से जो है, क्योंकि आधुनिक समाज में लोग बहुत ही लोभी हैं, तो इसलिए वो छीनना चाहते हैं. Materialistic people like Ravan try to get more and more wealth for their own sense gratification. They're taking the property of the Lord and trying to enjoy it for their own pleasure. तो इसलिए आधुनिक समाज में देख सकते हैं, लोग जो है वो बिल्कुल रावण जैसी उनकी मानसिकता है, तो वो छीनना चाहते हैं, लेना चाहते हैं लक्ष्मी को बगैर भगवान के, और इसीलिए जो है वो उनकी ये दुर्दशा है. This is a big problem. This is offensive because it's the Lord's wealth. That wealth belongs to the Lord. We use it for our sense gratification. The Lord will not be happy. We will suffer just like Ravan suffered. तो इस तरीके से अगर हम भगवान की संपत्ति को जो है अपने लिए लेना चाहेंगे, अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि वो संपत्ति भगवान की है. तो अगर हम लेना चाहेंगे तो हम इसके लिए जो हमें दंड भुगतना पड़ेगा. We know when Lord Rama was looking for Mother Sita, and then he heard she was on Lanka, Lord Ramachandra came to the shore of the Indian Ocean, and he looked in the ocean, and he was so angry just from his glance. All the ocean, all the water in the sea was heated. तो इसी तरीके से जो है सीता जी की तलाश करते हुए जब रामचंद्र जो है समुद्र के पास आए, और वो उस वक्त इतने क्रोध में थे कि उनके गुस्से से जो है समुद्र का पानी जो है वो भी जो है गर्म हो गया. Lord Ram was so angry, this rascal, he dares to take Lakshmi, take my pleasure potency away from me. In the same way, if we try to exploit the resources of the Lord, it's not pleasing to Him. We will suffer. तो इसी तरीके से भगवान जो बहुत क्रोधित थे कि ये धूर्त जो है किस तरीके से जो है मेरी संपत्ति, मेरी जो शक्ति है लक्ष्मी, वो मुझसे छीनने की कोशिश की इसने. इसी तरीके से आधुनिक समाज में लोग जब ऐसे छीनने की कोशिश करते हैं, इससे भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं. Of course, everyone needs some wealth. We're all entitled to enough. We're entitled to what we need. Our basic needs are there. But we shouldn't be greedy to always take more and more. तो ऐसी बात नहीं है कि हमें भी जो है ऐश्वर्य संपत्ति की जरूरत नहीं है, जरूरत है, सबको कुछ कुछ जरूरत है, मगर हमारा जो ध्येय है वो इस तरह नहीं होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बटोरे, और चाहिए और चाहिए. As is stated in Upanishads, Ishopanishad, Ishavashyam idam sarvam yat kincha jagatyam tena chaktena bunjataha magridaha kashasuddhanam. We should take therefore only those things which are necessary for ourselves. Don't take more, knowing well to whom it all belongs. तो इसी तरह से ईश्वर में बताया गया है कि हमें अपना जो प्राप्य है, तो वो प्राप्य हमें लेना चाहिए, मगर बाकी से ज़्यादा हम बटोरना नहीं चाहिए. हमें मालूम होना चाहिए कि ये बाकी संपत्ति दरअसल किसकी है. So we see in the example of Ravan how he got the results of his austerity. He became very powerful, and the result was he became very proud. तो जैसे हम देख सकते हैं कि रावण ने जो बहुत तपस्या की, तपस्या की वजह से तो उसको फल भी मिला, पर उसका नतीजा ये हुआ कि वो बहुत घमंडी बन गया. He's thinking, I'm so powerful, I can do anything I like. There's no law, nobody can stop me. I can do whatever I like. तो जो रावण को गलतफहमी हो गई कि मैं बहुत शक्तिशाली हो गया हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, मैं जो चाहूँ वो करूँगा. And when he heard about the beauty of Mother Sita, then he thought, she's for me, I should enjoy her.
तो इसी तरीके से जब उन्होंने माता सीता का सौंदर्य देखा तो उसे लगा कि ये तो मेरे लिए बनी है, मैं इनको भोगूंगा. He did not consider she's a married woman, she's the property of the Supreme Lord. He just thought, I want to satisfy my desires. तो उसने कुछ नहीं सोचा उस वक्त कि वो ब्याहता स्त्री है या वो भगवान की भार्या है, उनकी संपत्ति है, बस मुझे भोगना है. मैं Tried to take away Mother Sita, then it brought on about his death. Lord Rama had to come and kill him. तो सीता जी का अपहरण करने जो है करके जो है रावण ने जो अपनी मौत को दावत दी और इस तरीके से भगवान आए और उसको मौत की घाट उतारे. So we have to learn the importance of how to respect everything as the property of the Lord. तो इसी तरीके से हमें भी ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से हम इस बात का सम्मान करें कि हर वस्तु भगवान की संपत्ति है दरअसल. And we have to see that everything is used in the proper way for the pleasure of the Lord. और हम साथ ही साथ जो है ये देखें कि हम हर चीज को ऐसी हर संपत्ति को जो है भगवान की ही सेवा में इस्तेमाल करें. Srila Prabhupada was in America. He went. One university professor came to meet him. तो श्री प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, एक बार की बात है, एक विश्वविद्यालय का जो अध्यापक जो उनसे मिलने आए. And the professor had heard how Prabhupada was preaching about devotion to Lord Krishna. So he came in the room and said to Prabhupada, how can you worship a God who is an adulterer? तो जो क्योंकि उसने पहले सुन रखा था कि श्री प्रभुपाद जो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं, तो वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ उसने सबसे पहले प्रभुपाद को बोला कि आप ऐसे एक भगवान का प्रचार कैसे कर सकते हैं जो कि खुद लंपट है. Now, adulterer means you have more than one wife. You know, Krishna had many wives, right? So this man, the professor, began to criticize Krishna. तो क्योंकि हम जानते हैं भगवान के जो है एक से ज़्यादा अव्यापा स्त्रियां हैं, तो वो जो है वो भर्त्सना करने लगा वो अध्यापक कृष्ण की. So Prabhupada said to this professor, you're married, right? You're a married man. The man said, yes, I'm married. तो श्री प्रभुपाद ने उनसे पूछा आप भी तो शादीशुदा हैं कि नहीं? मैं हूँ. He said, but I only have one wife. Krishna has many wives. पर साथ ही साथ उसने बोला हाँ मैं ब्याहता हूँ पर मेरी एक ही बीवी है, कृष्ण की बहुत सारी बीवी हैं. Prabhupada said, it is you who are the adulterer. All women belong to Krishna. प्रभुपाद ने पलट के बोला कि वो नहीं, आप लंपट हो, सारी औरतें जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति है. You are thinking this woman belongs to you, she's your wife, but actually she's Krishna's property. आपने जो है स्त्री को अपनी पत्नी समझ लिया है, पर आपकी नहीं, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है. Prabhupada was showing how to see everything in relation to Krishna. श्रील प्रभुपाद जो है इसको उदाहरण दे रहे थे किस तरीके से हर वस्तु जो है वो भगवान से ही संबंधित है. And the nature of conditioned life is to think, this belongs to me, this is mine, it's for my pleasure. तो ये भौतिक जगत का जो स्थिति है वहाँ पर इसी तरीके से मानसिकता बनती है कि हर चीज हमारी है, मेरे लिए बनी है. So this is going against the laws of material nature. When you go against the laws, you get reactions, you get punished. तो मगर ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, तो जैसे ही आप इसके खिलाफ जाते हैं तो आपको सजा मिलती है. You take what doesn't belong to you, you're a thief. तो आप ऐसी कोई चीज जो आपकी नहीं है जब आप उसको लेते हैं तो आप चोर कहलाते हैं. Right, the life member came there in Mayapur. Prabhupada was asking him, what is your business? तो एक घटना है कि मायापुर में जो है एक लाइफ मेंबर आया, प्रभुपाद से बातचीत कर रहे थे. प्रभुपाद ने पूछा क्या आपका क्या व्यवसाय है? And the man said, oh, I have a glass factory. So Prabhupada was asking him, how do you make the glass? तो उसने बताया कि मेरी शीशे की फैक्ट्री है. तो उसने प्रभुपाद ने पूछा कि आप कैसे करते हैं शीशे का कारोबार? And so then the man said, well, we get the sand and we use the sand and melt the sand and it makes glass. तो उन्होंने बताया ऐसे कि हम रेत से इस्तेमाल करते हैं, रेत में से जो है उसको प्रोसेस करके हम बनाते हैं, हम कांच बनाते हैं. So then Prabhupada was saying, yeah, the sand, where do you get the sand from? तो प्रभुपाद पूछा हाँ बिल्कुल रेत, ये रेत कहाँ से मिलता है? And the man was saying, well, we have a mine. But Prabhupada said, yes, but whose sand is it? Who gave you the sand? उसने वो कहा कि नहीं हमारे पास जो है उसकी एक माइन है, मगर खान है तो खान. बस प्रभुपाद कहते हैं हाँ वो तो ठीक है, मगर रेत कहाँ से मिलती है, किसकी रेत है, किसने दिया आपको रेत? So then the man understood Prabhupada's point. He said, yes, well, Swamiji, everything belongs to Krishna. तो वो
इशारा समझ गया प्रभु ने, हाँ स्वामी मैं समझ गया, सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है. So then Prabhupada said to Bhakti Swarup Damodar Maharaj, he said to him, did you hear what he said? तो भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज साथ ही खड़े थे, तो उन्होंने पूछा तुमने सुना इसने क्या कहा? And he immediately said, he's a thief, Prabhupada. He's taking what does not belong to him. He's taking the sand. He said it's Krishna's sand. He's taking it. He's a thief. इसने खुद अपने मुंह से इकरार किया है कि ये भगवान श्री कृष्ण की रेत है जो ये खुद ले रहे हैं, तो ये चोर है. And so Prabhupada said to the man, he says you're a thief. And then the man said, but I also give donations to the temple. So Prabhupada then said, so you're just a little thief. Alright. So like that, there are many thieves. There are many, some are big thieves and some are little thieves. But actually, everyone's a thief. They're taking what belongs to Krishna. तो इसी तरीके से बहुत तरीके के चोर हैं, कुछ बड़े चोर हैं, कुछ छोटे चोर हैं, मगर सभी चोर जो हैं वो भगवान से कृष्ण की संपत्ति चुराते हैं. They have the same mood as Ravan. They're thinking everything is for my enjoyment. It's all for me. तो क्योंकि उनकी मानसिकता रावण जैसी है, वो यही सोचते हैं कि सब कुछ ये मेरा है और मेरे भोग के लिए बनी है. And the result is, when they act in the same mood as Ravan, they'll get the same fate as Ravan. They'll be punished by the Lord. They'll be put again into the wheel of birth and death. तो अगर रावण की मानसिकता से, रावण के भाव से जो है वो चलते रहे, तो रावण जैसे ही उनका हश्र होगा, वही हाल होगा, और इस तरह से वो जन्म मृत्यु चक्र से नहीं निकल पाएंगे. So very important that we conquer over pride, the great enemy, this pride, to think that I am the proprietor, I am the enjoyer. तो इसीलिए जो है हमें झूठे अहंकार पर विजय प्राप्त करने की जरूरत है, क्योंकि यही हमें बताता है कि हम जो है हम ही भोक्ता हैं, हम ही आनंद उठाने के लिए बने हैं. Right, even the great kings of Jaipur, you know, the king of Jaipur, he brought Govinda ji there, and then the Brijbasi people after some time said, we want to bring Govinda back. तो ये जो घटना है हम जानते हैं, जैसे कि जयपुर के महाराज जो हैं वो वृंदावन से जो है गोविंद देव जी को लेके गए, तो कुछ दिन बाद जो है ब्रजवासी दोबारा मांग करने लगे कि वापस भेजो गोविंद जी को. But the king said, he's my guest, he's come here, I can't tell him to go. तो राजा ने कहा कि भगवान तो हमारे मेहमान हैं, तो मैं कैसे उनको बोलूं कि वापस चले जाओ. So then the king made Govinda the king. And he said, I will be the servant of Govinda. And so in the same way, you bring a deity, you bring Krishna into your home, you should think Krishna is the proprietor of the home. तो आप जब भगवान को जो है मंदिर में अपने घर में जो है भगवान को लेके आते हैं, तो फिर अब भगवान जो है आपका घर जो भगवान की संपत्ति है. The home is not your home, it's Krishna's home, and we are living there for the service of Krishna. तो मकान जो है आपका नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण का घर है और आप वहाँ पर भगवान की सेवा के लिए रहते हैं. This is Krishna consciousness, seeing everything as the property of Krishna and using everything carefully for the pleasure of Krishna. इसी का नाम है कृष्ण भावना में, यानी हर चीज भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाए, हर वस्तु उनके इस्तेमाल उनके प्रसन्नता के लिए की जाए. The devotees know how to turn matter into spirit. क्योंकि इसलिए भक्तों को ही मालूम है कि किस तरीके से भौतिक पदार्थ को आध्यात्मिक बनाया जा सकता है. Right? This is bewildering for people. How is it possible? Material can become spiritual? Yes, simply by the process of connecting it to Krishna. तो आम आदमी के लिए जो है ये तो बहुत ही उसको चौंका देने वाला तथ्य है कि किस तरीके से भौतिक वस्तु को आप आध्यात्मिक बना सकते हैं, मगर भक्त ये कर सकते हैं भगवान से हर वस्तु को जोड़कर. We go to market, we get the boga. Boga means sense enjoyment. But then when we prepare the prasadam, then it becomes spiritual, it becomes prasadam, Krishna's mercy. जैसे हम जब बाजार से जब अपने सामान खरीद कर आते हैं तो उसे भोग कहते हैं, भोग यानी भोग वस्तु, मगर दोस्तों जैसे भगवान को अर्पित करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है और अब वो आध्यात्मिक बन चुका होता है. So in the same way, everything which is material can be spiritualized by the expert use of bhakti yoga.
तो इसी तरीके से हर भौतिक वस्तु को आध्यात्मिकरण हो सकता है भक्ति योग के माध्यम से. Right, this home, this house was material before the Krishna consciousness movement came here. It was just some mundane house, but it's become the transcendental resident of the Supreme Lord Krishna. तो जैसे इसी मंदिर को आप ले लीजिए, घर को ले लीजिए, वो क्या था? एक मकान था, एक इमारत थी, मगर जैसे आप वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को लेके आते हैं, उसका आध्यात्मिकरण हो जाता है, वो मंदिर समान बन जाता है. So devotees want to spiritualize this material world. We want to make this world the spiritual world. तो इसीलिए भक्तों की यही अभिलाषा रहती है कि हर भौतिक वस्तु का आध्यात्मिकरण हो, इस जगत का भी जो है ये आध्यात्मिक बन जाए. Wealth causes so many problems. People get money and they become so proud. They're thinking, I'm rich man, I'm important man, I'm successful man. तो ऐश्वर्य से जो है कई प्रकार की मुसीबतें आती हैं. जैसे इंसान को पैसा मिलता है तो उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, बहुत कामयाब आदमी बन गया हूँ, बहुत ताकतवर बन गया हूँ. Prabhupada met Alfred Ford. You know Alfred Ford, he was a young man when he became Prabhupada's disciple. He's not so young now, but he's the grandson of the founder of the Ford Motor Company, and he's Prabhupada's disciple. तो जैसे अल्फ्रेड फोर्ड अमरीश प्रभु जो है, जब वो पहली बार प्रभुपाद से मिले तो वो बहुत ही नवीन युवक थे उस वक्त, और मगर वो पोते थे हेनरी फोर्ड के, जो फोर्ड कंपनी के मालिक और प्रतिष्ठाता हैं. So Prabhupada, Alfred Ford, he came to meet Prabhupada for the first time, and Prabhupada looked at him and said, "Oh, so you are the grandson of Henry Ford." तो जैसे पहली बार वो प्रभुपाद से मुलाकात करने आए तो प्रभुपाद ने उनकी ओर देखा और कहा, अच्छा आप ही हैं हेनरी फोर्ड के पोते. And he describes, Alfred Ford described, he said, I was feeling, oh, Prabhupada knows my family, he knows my grandfather. He is feeling proud. तो अल्फ्रेड फोर्ड जी जो है वो भी बताते हैं अमरीश प्रभु कि मैं बहुत खुश हो गया था सुन के, क्योंकि ये देख के और बहुत फूल गया था कि देखो प्रभुपाद जो है मेरे परिवार को जानते हैं, मेरे दादाजी को जानते हैं. And then Prabhupada said to him, where is he now? Where's your grandfather now? तो उसका अगले ही पल प्रभुपाद ने उनसे पूछा, तो अब आपके हेनरी फोर्ड का आपके दादाजी कहाँ हैं? So then he said, I became very small, I became very humble, because I knew my grandfather he won't be in a very good situation now. तो फौरन जो है अल्फ्रेड फोर्ड अमरीश प्रभु जो है वो बहुत ही विनम्र हो गए, क्योंकि उनको मालूम था ये सवाल क्यों पूछा गया है कि शायद अब मेरे दादाजी जहाँ पे भी हैं अच्छी हालत में नहीं है. So if we get any wealth, any success, any opulence in this world, it's our duty, we must use it for Krishna. तो इसीलिए हमें कोई भी ऐश्वर्य मिले, कोई भी हमें कामयाबी मिले, कोई भी हमें दौलत मिले, तो हम उसको जो है हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, वो हमें फौरन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए. We should, if we have any wealth at all, use it for Krishna. अगर आपके पास कोई भी संपत्ति है, धन है, तो उसको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाइए. And if you don't have any wealth, then use your intelligence for Krishna. अगर आपके पास कोई रुपया पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी बुद्धि भगवान की सेवा में लगाइए. And if you don't have any good brain, then just use your words for the service of Krishna. तो अगर आपके पास अच्छी बुद्धि भी नहीं है तो आप अपने शब्द, अपने वचन जो है भगवान श्री कृष्ण के Chant the holy name यानी कि भगवान का दिव्य नाम का जप कीजिए and do some humble service. और कुछ विनम्र सेवा कीजिए. It's very important to cultivate the quality of humility. तो विनम्रता का भाव विकसित करना बहुत जरूरी है. Even in the Christian Bible, they say, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." तो इसी तरह जैसे बाइबल में जिक्र है कि जो विनम्र है उस पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि वही जो है भगवान के धाम को प्राप्त कर पाएगा. And Caitanya Mahaprabhu, of course, in his Shikshastikam, he's taught all of us we should be more tolerant than the tree and think of ourselves lower than the straw in the street. तो जैसे चैतन्य शिक्षाष्टकम में जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील होना चाहिए और विनम्र होना चाहिए, घास के तिनके से भी ज़्यादा. Means we should have ego in proportion to our spiritual dimension. The spiritual dimension, the soul, is 1/10,000th of the tip of a hair.
तो महाराज कह रहे हैं कि हमारा जो अहंकार है वो उतना ही होना चाहिए, उसका भी आकार उतना ही होना चाहिए जितना हमारा आकार है, यानी कि बाल के 10 का अग्रभाग का 10वां हिस्सा. But we are in the bodily conception. We are thinking, I am big man, I am rich man, I am famous man. तो मगर हम जब देहात्म चेतना के तहत जो है हम ये समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत अमीर आदमी हूँ. So we have to be very careful to guard against these dangers, not to become illusioned by the material energy and to think of it for our pleasure. तो इसलिए जो है हमें सावधान भी रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम ये जो भौतिक जगत है उसको जो माया शक्ति है इससे अपने आप को बचा के रखें. Therefore, Bhagavad-gita, Lord Krishna gives us the peace formula: Bhoktaram yagna tapasham sarva loka maheshwaram suridam sarvabhutanam gyadvamam shantim richati. We want peace. Here's how you get peace. तो भगवद गीता में जैसे शांति सूत्र दिया गया है तो हमें सबको शांति चाहिए, कैसे, तो ये यहाँ पर दिया गया है. A peaceful mind is to understand everything belongs to Krishna. It came from him. It's all for his pleasure, and he is our best friend. तो ये समझना चाहिए हर सब कुछ भगवान की संपत्ति है, उन्हीं से आई है, उन्हीं के लिए है, और भगवान श्री कृष्ण जो है हमारे मित्र हैं स्वरूप में. When we get a little wealth or a little position in the material world, we're thinking, I am the best friend of everyone. तो जैसे हमें थोड़ी दौलत मिलती है, थोड़ी शौहरत मिलती है, तो हमें जो है गलतफहमी हो जाती है कि मैं सबका दोस्त हूँ. Then we become God's competitor. और हम जो है भगवान के प्रतिस्पर्धा में आ जाते हैं. There's a lot of people competing with God. ऐसे बहुत लोग हैं जो भगवान से प्रतिस्पर्धा करते हैं. But no one is defeating him. Everyone is defeated by the laws of time. तो मगर आज तक जो है कोई उनको पहचान नहीं सका, बल्कि प्रकृति और वक्त जो आया, जो समय आया, वो उसको अपनी चपेट में ले गया. Yeah, so many great men, big emperors, big powerful leaders, they come and go just like bubbles in the sea. तो बहुत बड़े-बड़े लोग, बहुत मशहूर लोग आते हैं और चले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि समुद्र में बुलबुलें चढ़ती हैं. But one who is actually wise will think carefully how to make proper use of this human life to liberate the soul from birth and death. तो समझदार आदमी समझ सकता है कि किस तरीके से जो है हम इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करें और हम यहाँ से निकल सकें. You cannot take your wealth with you at the time of death. कि आप जो है मरते वक्त अपनी संपत्ति अपने साथ नहीं ले जा सकते. Right? Kali hath ayate, kali hath chalo. Very well known in India, right? But it's well known, but nobody follows. We all forget. खालिया जाओ, ये बहुत प्रसिद्ध है, जानते तो सब है, तो बस इसको फॉलो, इसको मानने वाले बहुत कम लोग हैं. And we're making so many plans, so many arrangements to hold on to everything. तो हम बहुत बड़े-बड़े जो है इसीलिए परिकल्पनाएं बनाते हैं, इस तरीके से सब चीजों को जो है संजो के बटोर के रखते हैं. Prabhupada said, you may be the great man, big statesman, big leader. Next life you may become the dog. हो सकता है बहुत बड़े आदमी हो, बहुत देशभक्त हो, बहुत बड़े नेता भी हो सकते हैं, पर क्या पता अगले जन्म में जो है कुत्ते का जन्म लेना पड़े. It's not a very great credit. तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी. Now in India, everybody's running on 4 wheels. The same business as the dog with 4 legs. Where is food? Where is sleep? Where is sex? Where is defense? तो जैसे एक कुत्ता जो है वो 4 पैरों से दौड़ता है. हिंदुस्तान में गाड़ियों की संख्या बहुत हो गई है, तो 4 पहियों पे सब दौड़ते हैं, पर दौड़ते उसी लिए कि कहाँ पर खाना मिलेगा, कहाँ मैथुन मिलेगा, कहाँ सोने को मिलेगा, कहाँ कोई सहूलियत मिलेगी. So we become animals, Dvipada Pashu, the 2 legs animals, but the same business as the animals, just eat, sleep, mate and defend. No time for anything else, no thought about the next life. तो ऐसे हम द्विपद पशु के समान बन जाते हैं
कि बिल्कुल जो खाना सोना बच्चे पैदा करना और अपना बचाव इसी के पीछे वो भाग रहा है। इसके अलावा ना कुछ सोच सकते हैं ना अगली जिंदगी हमारी अगली जिंदगी कैसी होगी इसके बारे में मैं कुछ। And when we do think about the next life, we're thinking, I'll go to heaven, I will enjoy the beautiful women there, oh, I'll have a good time there, many parties are there. और अगर सोचते भी हैं तो हर कोई यही सोचते हैं कि हाँ अगले जन्म में स्वर्ग ही जाएंगे, वहाँ पर जो है बहुत हमें सुंदर औरतें होंगी, हम सब भोग करेंगे, बहुत खुशियाँ मनाएंगे। Here we only drink beer, there they drink somras. Oh, this will be... We're thinking more about enjoyment. We do not understand the temporary nature of this world. तो सिर्फ जब भी सोचते हैं स्वर्ग के बारे में, सिर्फ वहाँ के भोगों के बारे में सोचते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि दुनिया जो है कितनी क्षणभंगुर है। A famous example in 10th canto Bhagavatam about Maharaja Nriga, how he was giving charity, very great charity, the highest charity. He was giving very good cows who had only one calf, who were giving lots of good milk, and he would give these cows to brahmanas, to pure qualified brahmanas. जैसे श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में जो है राजा नृग की कथा आती है कि बहुत बड़े दानी थे और वो बहुत दान देते थे, विशेषकर ब्राह्मणों को गायों का दान और दूध देने वाली गायों का दान, बछड़ों के साथ गायों का दान। He was thinking, I will enjoy, I'm doing the best charity, I will get great results, I will get a lot of benefit from this. तो वो यही सोच रहे थे कि मैं बहुत दान दे रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फल मिलेगा। But he made one little mistake. One cow was given to the two different brahmanas. And he told the brahmanas, I'll give you each both 100 cows to make up for that one cow. They said, no, I want that cow. अब वो जो एक ही गाय थी और वहाँ दो ब्राह्मण थे दावेदार उसके, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं एक गाय के बदले हजारों गाय दे दूंगा। उन ब्राह्मणों ने कहा कि हमें यही गाय चाहिए। He could not satisfy the two brahmanas. The result was he got the offense of stealing from a brahmana. तो क्या वो दोनों ब्राह्मणों को संतुष्ट नहीं कर पाए? क्या नतीजा मिला? उनको ब्राह्मणों की संपत्ति को चुराने का जो है पाप लगा। This is the danger of pious activities. A little mistake and you get big reaction. तो यही पुण्य कर्म करने का जो है ये खतरा बना रहता है। छोटी सी गलती वहाँ बड़ा अंजाम भुगतना पड़ता है। So this Nriga, he had to be punished for stealing from a brahmana. The result was, although he'd done so many pious activity, he became a lizard in his next life. तो इतना सब जो है पुण्य कर्म करने के बाद भी राजन के साथ क्या हुआ? अगले जन्म में वो एक गिरगिट बने। He had to be in the body of a lizard in the bottom of a well for some time. एक कुएं के अंदर एक कुएं के अंदर जो है गिरगिट की जिंदगी जो है मिली उनको कुछ समय के लिए। So we're reminded about this. Don't be attracted to these pious activities and think you'll get a lot of benefit. तो ये सब हमें ये लीला में यही याद दिलाने के लिए है कि पुण्य कर्म के पीछे ना भागे, उसका ऐसा नतीजा भी हो सकता है। But if you do a little devotion, it can save you from the greatest danger. मगर अगर आप थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो आपको बड़े से बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। नेहाभिक्रमा प्रचोति प्रत्यवयो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात्. A little advancement, just a little devotion for the Lord can save us from the greatest danger, the danger of becoming a dog or a lizard, losing this valuable human life. तो ये थोड़ी सी भी भक्ति मार्ग में प्रगति बड़े से बड़े खतरे से बचो। वो बड़ा से बड़ा खतरा क्या है कि मनुष्य जीवन का जो बहुमूल्य जीवन है ये इससे हाथ धो बैठना और कोई जानवर की योनि में जाना। We have to be very careful. This human life is not very long now in Kali Yuga. We don't live a long time. You get a few short years and the life is finished. You must use your time very carefully. Chanakya Pandit said, one moment lost can never be bought back.
तो इसीलिए मनुष्य जीवन खास तौर पर कलयुग में वैसे भी बहुत लंबी जिंदगी नहीं होती है, चंद पल होते हैं, तो बहुत ही सावधानी के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे चाणक्य पंडित बताते हैं कि एक गुजरा हुआ एक पल आप वापस नहीं ला सकते किसी भी तरह। So it's a great fortune for the people in Punjabi Bagh that this Krishna consciousness movement has come here to give all of you a chance to engage in Krishna conscious activities. तो पंजाबी बाग में जो है ये बहुत सुनहरा मौका है कि यहाँ पर कृष्ण भावना आंदोलन आया है, कृष्ण भावना यहाँ पर है ताकि आपको जो है कृष्ण भावना भाविक बनने का मौका दे सके। And whatever service you do for Krishna, that's going in your spiritual bank account. You'll never lose that. It will never diminish. Your material bank account, that's diminishing. Every day you go to the market, you go to the bazaar, you go shopping, your bank account's going down, you're spending the money. But your spiritual bank account, the more you do seva, the more you chant, the more you worship and donate for Krishna, the more it's going into your spiritual bank account, eternal benefit. तो जो ये आध्यात्मिक बैंक अकाउंट है इससे कभी भी कोई घटता नहीं है। आप हमारा जो भौतिक बैंक अकाउंट है वो हमेशा घटता है, जैसे हम बाजार जाते हैं कुछ खरीदते हैं वो कम होता है, पर आध्यात्मिक बैंक अकाउंट जिसमें जैसे आप सेवा करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्ति का पालन करते हैं तो वो बढ़ता रहता है और वो घटता नहीं है। Right, you do a little service in this life, we go on and do more in the next life. We're serving Krishna now, we'll go on to serve Krishna in the next life. तो अगर हम यहाँ पर सेवा करते हैं, इस जन्म में हम सेवा करते हैं तो अगले जन्म में हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे, तो हम इस तरीके से भगवान की सेवा करते रहेंगे। We don't know where we'll go. We may go to Golok, we may go to Vaikuntha, we may just go, come back again in this world. But we'll continue to be connected with Krishna. We'll have the association of devotees. हमें नहीं मालूम हमारे साथ क्या होगा, हो सकता है हम इसी जन्म में गोलोक चले जाए, वैकुंठ चले जाए या ना जाए, वापस यहाँ आए, मगर हम हर सूरत हाल में हम भगवान श्री कृष्ण से जो जुड़े हुए रहेंगे। It's a great fortune, a great rare opportunity to get the association of devotees. तो भगवान के भक्तों का संग मिलना ये बहुत बड़ा अवसर है और बहुत सौभाग्य की बात है। Just think, 8,400,000 different species of life. Only 400,000 are human. It's rare to get human body. तो योनि में सिर्फ 4 लाख मनुष्य की योनि बताई गई है, तो मनुष्य जीवन वैसे भी जो है बड़ा दुर्लभ है। But it's even more rare to get the association of devotees. इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में भक्तों का संग मिलना और ज़्यादा दुर्लभ। We must take advantage. We must take as much advantage. How can we can consistently maintain enthusiasm in Krishna consciousness? By associating with enthusiastic people. तो सवाल ये था कि हम किस तरीके से अपना कृष्ण भावना में उत्साह बरकरार रख सकते हैं। हमारा कहना है उत्साही भक्तों का संग करते हैं। By understanding more the life of Srila Prabhupada and his dedication to his spiritual master. तो खास तौर पर श्रील प्रभुपाद की जीवनी को समझ के और श्रील प्रभुपाद का जो अपने गुरु के प्रति जो उनका भाव था उसको समझ के समर्पण भाव। And just simply by being enthusiastic, by keeping ourselves, by always wanting and being eager for service. तो और अपने आप को उत्साहित रख के यानी कि अपने आप को सेवाओं के लिए प्रेरित रखना। How does Prabhupada define enthusiasm in Nectar of Instruction? He said it is endeavoring with intelligence for Krishna consciousness. तो जैसे उपदेशामृत श्रील प्रभुपाद इस तरह से जो है उत्साह की परिभाषा देते हैं कि उत्साह का मतलब है हमेशा भगवान के लिए कार्य करना अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए। माता जी ने बैठ। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है जैसे आपने बताया कि सेवा क्यों हमारे पास यानी हम ग्रस्त भक्त हैं तो हमारे पास जो भी हमारे थोड़े बहुत से गुण की जैसे ज्ञान है थोड़ा थोड़ा ज्ञान जो हमारे बोलने की हमारी वाणी है उसको हम सेवा में लगाते हैं तो तब कितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि ग्रस्त के पास तो टाइम का जरा तो आप थोड़ा सा। She's saying that, like, as you said, that we should engage ourselves more on Krishna consciousness by engaging in more on Krishna conscious activities by sparing more time for Krishna. So, however, we in the Grahastha ashram, we hardly find time. So, what can we do about it?
Well, you won't always be in the Grihastha ashram. Always won't be. You should move into Vanaprastha. आप हमेशा गृहस्थ आश्रम में बने ना रहे ना, आप वानप्रस्थ की तरफ आगे बढ़े. Just like you may be busy with young children, but the young children are not young children eternally. They grow up. तो जैसे कि आप हो सकते हैं कि अभी अपने आपके बच्चे जो है वो छोटे हैं या जवान हैं, तो वो हमेशा छोटे बच्चे नहीं रहेंगे. So when they grow a little bit older, they take care of themselves. And that's time for you to get busy in Krishna service again. तो जब आपके बच्चे अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, तो आप अपना ध्यान जो है कृष्ण की ओर देंगे. And similarly, Grihastha ashram, Grihasthas also there, they need to be Krishna conscious. They need to do service for Krishna, because if they're not doing service for Krishna, then they're in Maya. तो ये समझना चाहिए गृहस्थ आश्रम में भक्तों को कि उनको भी जरूरत है कि वो भगवान की सेवा करें, उनको भी जरूरत है कि वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े, क्योंकि अगर वो गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नहीं कर रहे तो जान लें कि वो माया में है. There's two kinds of householders. There's the Grihastha and the Grihamedi. तो इसलिए दो तरह के लोग घर पे रहते हैं, एक वो जो गृहस्थ है और एक वो जो गृहमेदी है. So Grihastha means a spiritual ashram, means the center of their home is Krishna. तो गृहस्थ का अर्थ है कि उनका घर का जो केंद्र है वो कृष्ण है. And so in the home there will be also worship of Krishna, there will be chanting of the holy name, there will be discussion of scriptures. तो इसीलिए घर के अंदर जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा होनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप होना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की वाणी की चर्चा होनी चाहिए शास्त्रों में. You may also cook some, maybe you make some sweets at home and you send them to the temple to be offered to the deities. और जो है घर पे जो है आप जैसे उदाहरणार्थ आप घर पे मिठाइयाँ बना सकते हैं और मंदिर भेजे उसको वहाँ पे भोग लगने के लिए. And so Grihastha life it's very essential to do service for Krishna. गृहस्थ आश्रम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें. Because if you're not serving Krishna, then you become Grihamedis. क्योंकि अगर आप ये सेवा नहीं करते भगवान श्री कृष्ण की, तो आप गृहमेदी बनने का खतरा है. And of course, I said also, Grihastha, you move into Vanaprastha, you retire. और गृहस्थ का मैं साथ-साथ जैसे मैंने बताया शुरुआत में, आप भी गृहस्थ से आगे बढ़िए वानप्रस्थ की तरफ. And with Vanaprastha life, that means you're full-time service for Krishna. वानप्रस्थ का मतलब क्या है? वानप्रस्थ का मतलब आप पूरी तरीके से आजाद हैं भक्ति करने के लिए. सर्व भक्ति. That's successful Grihastha life. इसे कहते हैं कामयाब गृहस्थ जीवन. Moving into the Vanaprastha stage. आपकी कामयाबी का मतलब है आप गृहस्थ से आप वानप्रस्थ की ओर बढ़ेंगे. Thank you, Maharaj, for a wonderful class. Maharaj, I heard Srila Prabhupada was saying that the last country to become Krishna conscious will be China. So I wanted to hear some experiences you must have had preaching in China. Well, there are many countries still to become Krishna conscious. तो कर्णचंद्र को कहते हैं कि हमने कहीं सुना है ऐसा कि प्रभुपाद ने शायद एक जगह ऐसा जिक्र किया है कि इस दुनिया में आखिरी जो देश जो कृष्ण भावना में बनेगा वो चाइना बनेगा. तो क्या आप चाइना के अपने प्रचार के विषय में कुछ उसका अपना तजुर्बा बता सकते हैं? तो महाराज कह रहे हैं कि नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग बचे हैं जो कृष्ण भावना में नहीं बने. There's a lot of atheistic governments all over the world. अभी पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे नास्तिक जो सरकारें हैं. And Prabhupada was very much aware how these governments are the biggest enemy of our Krishna consciousness movement. वो ये बखूबी जानते थे कि किस तरह की नास्तिक सरकार कृष्ण भावना में के दुश्मन है. So, there's so much to preaching to be done. There's so many countries where Krishna consciousness, like North Korea, you may like to go there, North Korea, not very easy. If you think China's hard, North Korea, whoa. अभी भी बहुत ऐसे मुल्क हैं, ऐसे देश हैं जहाँ पर कृष्ण भावना में नहीं है, जैसे कि उत्तरी कोरिया. हो सकता है कि आप वहाँ जाना चाहें. आप कह रहे हैं कि कृष्णा चाइना में मुश्किल है, आप नॉर्थ कोरिया जाकर देखिए. Vietnam also another communist country, not yet opened. And we need to go there and preach. वियतनाम भी जो है वो वहाँ पर साम्यवादी सरकार है, तो वहाँ पर भी जाने की जरूरत है. हो सकता है आप वहाँ जाना चाहें. So, you want to do some pioneering?
very welcome. आप अग्रगण्य भूमिका अगर निभाना चाहते हैं रामचंद्र के क्यों रावण? Thank you very much, Maharaj. Very enlightening. Hare Krishna. Maharaj, like when we perform devotional service, we get a lot of facilities, and in the name of using it for Krishna's service, there is a tendency to enjoy those facilities also. So, how to distinguish in myself that whether I am enjoying these facilities or not, and what precautions should I take? Yes, this is also a big Yes, okay. This is a big problem in devotional service, that we enjoy facilities sometimes. तो ये कृष्ण भावनामृत में जो है ये बड़ा इसके अंदर ये बहुत एक हमारे जो है संघर्ष रहता है जगह रहती है कि कृष्ण भावनामृत में आने के बाद यहाँ पर जो हमें सहूलियतें मिलती हैं उनका भगवान के ऊपर इस्तेमाल करने के जगह हम खुद अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू करते हैं. Because we're surrendering everything to Krishna, Krishna also gives a lot of facilities. तो जैसे जैसे आप भगवान से कृष्ण को अपना समर्पण करना शुरू करते हैं तो उधर से भगवान भी आपको बदले में वापस देना शुरू करते हैं. And we can become attached to these things and enjoy them. तो फिर जो है धीरे-धीरे ऐसे प्रवृत्ति बनती है कि हम भी उनके प्रति उन चीजों सहूलियतों के प्रति आसक्त होना शुरू करते हैं. And this is a very dangerous thing for devotees, for leading devotees. तो ये भक्तों के लिए सारे भक्तों के लिए बहुत खतरनाक है. Yeah, as you go up, you take a higher and higher position, more and more responsibility, you get more and more facilities, it becomes more and more dangerous. तो जैसे-जैसे आप जो है ऊपर की तरफ चलते जाते हैं भक्ति में आपको जितना ज़्यादा जिम्मेदारी उठाते हैं उस जिम्मेदारी की एवज में आपको उतनी जो सहूलियतें मिलती हैं तो ये बहुत खतरनाक बनता चला जाता है भक्त के लिए. When you're just low, then you don't fall very far. If you fall down, you don't fall very far. But when you go up the ladder and you're on top there, then if you fall, it's a big fall. Whoa. तो जैसे कि अगर आप किसी सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं और पहले ही सीढ़ी पे हैं, अगर वहाँ से गिर भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है. मगर अगर आप बिल्कुल सीढ़ी के ऊपर चढ़ चुके हैं और चोटी से आप गिरे तो फिर आप समझ सकते हैं तो वो गिरना जो है बड़ा ज़्यादा होता है उसका असर. Therefore, very important is to have association with people who are our peers, at least peers and seniors also. तो इसीलिए जितना जितना ऊपर चलते जाते हैं वहाँ पर वरिष्ठों की जरूरत पड़ती है सानिध्य करने का, मगर साथ वालों के साथ साथ करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है. Because they will help you to see things in the proper way. क्योंकि वो जो साथ वाले हैं वो आपको जो भी हालात हैं उसको सही रूप से देखने में ज़्यादा मदद कर सकते हैं. Yeah, love, puja and pratishta, the great enemies for all devotees. तो पूजा या प्रतिष्ठा ये सभी भक्तों के लिए बहुत बड़े शत्रु हैं. Yeah, we want to be, we like to be honored. We take pleasure, and we have to offer everything to Krishna. तो हमें सभी को अच्छा लगता है कि उसको जो है मान मिले, लोग उसकी इज्जत करें, मगर ये सभी कुछ जो है भगवान की सेवा में लगानी होती है. Just like Prabhupada said to the devotees, he said, "I'm always praying to Krishna. Please don't let me fall down." जैसे श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को वो कहते थे कि मैं हमेशा भगवान से कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि मैं कभी गिर ना जाऊँ कृष्ण भावना से. So devotee also who's taking responsibilities and who's given facility, you have to also pray to Krishna like that. Please protect me, let me use everything carefully in your service. तो इसी तरीके से जो भक्त लोग जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी लेते हैं उनको उतनी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कृष्ण से कि मैं जो मुझे आप जो है बचा के रखें, मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूँ. Help me always to remember that I am nothing. I am simply the servant of the servant of the servant. और मुझे जो है मदद करें कि मैं हमेशा ये याद रख सकूं कि मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ दासों का दास हूँ. If we forget these things, then we start to think, yeah, I need this, I want this, I have to have that. You know, we become demanding, and this is also not very good. तो क्योंकि ये भूल जाने से जो है हम जो है हमारी प्रवृत्ति हो जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मांग करने लगते हैं. फिर हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, ये भी होना चाहिए.
Prabhupada was very tolerant. But at the same time, when he understood that we could do more, then he would encourage us to try to do better. तो प्रभुपाद जैसे प्रभुपाद को अगर ये लगता था कि ये हम जो है जितना हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा कर सकते हैं, तो फिर प्रभुपाद उस तरीके से हमें प्रोत्साहित करते थे कि हम और बेहतर करें. I remember Prabhupada when he first came in, when coming in India, I was in India like even as far as 1975, Prabhupada didn't have a car. He didn't have his own car. तो श्रीला प्रभुपाद जब वापस प्रचार करके हिंदुस्तान आए, महाराज कहने में 1975 में भी यहाँ पर था प्रभुपाद के साथ, तभी भी श्रीला प्रभुपाद की अपनी गाड़ी नहीं थी कोई. Prabhupada came, oh, you have a transport company. Can you arrange a car to take me to Vrindavan tomorrow? तो 1975 की बात है जब हमारा मंदिर बंगाली मार्केट में था और उस वक्त श्री प्रभुपाद से जो मिलने के लिए ट्रांसपोर्टर आया, तो प्रभुपाद ने उससे पूछा कि आपको ट्रांसपोर्टर का काम है, आप मेरे लिए गाड़ी का इंतजाम कर सकते हैं, वृंदावन जाना चाहता हूँ. And the man said, oh yeah, very good. I said, it will be my pleasure to do that for you. वो आदमी जो है वो बड़ा खुश हो गया, उसने कहा कि बड़ा सौभाग्य है कि मैं कर सकूँ आपके लिए सेवा. So that was 1975. Prabhupada, you know, he had a worldwide movement, but he didn't even have one car for himself. Then later on, 1976 or so, I think it was, they got Prabhupada an ambassador. They got 3 ambassadors, one in Bombay, one in Calcutta, one in Delhi. Okay. तो फिर 3 गाड़ियों का इंतजाम था. 1976 में जो श्री प्रभुपाद को 3 ambassador गाड़ियाँ कर दी गई. एक कलकत्ता में रहती थी, एक मुंबई में रहती थी, एक दिल्ली में रहती थी. But of course they were for Prabhupada to go and visit different people and receive Prabhupada when he would arrive, when he would come in, sometimes the train station, sometimes the airport. तो गाड़ी सिर्फ प्रभुपाद के इस्तेमाल होती थी, जैसे प्रभुपाद कभी जो प्रभुपाद के कभी स्टेशन से एयरपोर्ट से लाना ले जाना हो, तो सिर्फ उसमें इस्तेमाल होती थी. So we have to remember whatever facilities we have, they're by the grace of Prabhupada, and we're meant to use them strictly in the service of Krishna. तो अगर ये हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम सहूलियतें हम लें वो प्रभुपाद के लिए हैं और खासतौर पर भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए हैं. Right? They're not for our pleasure. तो हमारे आनंद के लिए नहीं. Right? Even we get sick, you don't take the car. There was no taking Prabhupada's car to go to the doctor. उन दिनों जो है अगर आप बीमार भी पड़ गए तो ये नहीं कि श्री प्रभुपाद की गाड़ी उठाए पहुंचे डॉक्टर के पास. No. There was one time it happened. I think he was the temple president of Calcutta, or no, somewhere anyway, I can't remember. But anyway, who was taking the car? He said, oh, Prabhupada, my wife was sick. I took my wife to see the doctor in your car. Prabhupada was not pleased at all. तो श्री प्रभुपाद की बात है, शायद कलकत्ता है, मार्केट ठीक से याद नहीं कौन से मंदिर के अध्यक्ष थे, तो वो प्रभुपाद को बोले कि प्रभुपाद मैं आपकी गाड़ी ले जा रहा हूँ, या ले गया था कि मेरी बीवी बीमार थी तो डॉक्टर के पास. प्रभुपाद कुछ नहीं वो गाड़ी ले गया इसलिए. No, everything's for Krishna, for using for the service of Krishna. तो ये सारी संपत्ति जो है मंदिर की संपत्ति ये भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए. For going for preaching, can use cars. या आप जो है प्रचार के लिए गाड़ी लेके जा सकते हैं. So we have to be cautious. We have to be careful. We have to constantly check ourselves. तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, हमेशा होशियार रहना चाहिए, हमें अपने आप को हमेशा जांचते रहना चाहिए. So just like in ISKCON, in our society, ISKCON, every sannyasi, they have to give a report every year, how much income they have, what they did with every penny, they have to account for everything. जैसे ISKCON में जो है ये ISKCON का कायदा है कि सालाना हर सन्यासी को, ISKCON के सन्यासी को जो है एक रिपोर्ट देनी पड़ती है सन्यास मिनिस्ट्री को कि उन्होंने कितना खर्चा किया, कितना उनको जो है इस साल चंदा मिला और कैसे क्या किया उस पैसे का और सारे साल क्या किया. Okay. So very cautious. You have to pray to Krishna. Please protect me. Please don't let me fall down. तो बहुत सावधान रहें, हमेशा भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे हमेशा जो है आप अपने संरक्षण में रखें ताकि मैं गिर ना जाऊं. Whatever money we have, it's not mine. It's Krishna's. जो भी पैसा है वो मेरा नहीं है, भगवान से कृष्ण का है.
हरे कृष्ण महाराज धन्यवाद। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुझे प्रशंसा इस बात की है कि अपना देश छोड़कर विदेश में भी इतना प्रचार कर रहे हो आप, तो जगत गुरु श्री प्रभुपाद का आपकी बहुत कृपा बनी रहे और भगवान की भी कृपा बनी रहे आपके ऊपर। हम लोग जब चाइना आते हैं 7 दिन के या 10 दिन के लिए बड़ा टफ होता जीवन बिताना वहाँ पर, तो आप तो इतना बीच समय तक प्रचार कर रहे हो। मेरी भगवान से बार बार प्रार्थना है और अच्छे से प्रचार करो। हरे कृष्ण। So he is like kind of praying for you, so that you continue to preach like this, because he's saying that whenever we go to China for 7 or 10 days, it becomes so tough for us to, even survive and maintain ourselves over there. And you are doing it for such a long time, and you are preaching over there. Leaving your own country and your own home, you are in a foreign lands, such a tough place like China. So we all would like to pray to Shri Radha and Krishna that they shower their mercy on you. Thank you very much. Thank you very much. Very kind. Okay, so we'll stop here. Thank you very much. Srimad Bhagavatam ki. Srila Prabhupada.